Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture. It is written here is 23. Losses in the practical switches, chapter 1. Ashfaq Ahmed. If I'm audible and my screen is being shared to you, please let me know so that I can comfortably start. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. तो मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने लास्ट कहाँ तक आप लोगों को पढ़ाया था. आई डोंट हैव वीडियो. तो क्या आप लोग ऑडिबल नहीं है क्या? सर स्लाइड 8-9 तक पढ़ा आ रही है सर. जी आवाज आ रही है सर. Okay. Thank you. The last time I did not remember where we were in the last lecture. If you know about, please let me know. This was we covered this one. We stated about the losses in the ideal switches, and we know that the losses in the ideal switches. We discussed two type of losses in the practical switches. Number one was the conduction losses, and number two was the switching losses. The conduction losses was the losses where the transistors turns on, and it keeps on. It keeps on completely. And when the transistor is turned off, so in both the cases, when the transistor stays at off position and or on position, the losses is called the conduction losses. And the switching losses, for example, I have shown here, use the switching losses. Where is the conduction losses? Okay, I don't have shown the waveform so far. Okay. So and then we discuss the switching losses. What is the switching losses? There is no switching losses in the ideal switches, because ideal switches, when it turns on after off period, it immediately turns on. Similarly, it immediately turns on means it immediately turns on means कि ये current immediately flow होना शुरू हो जाता है. Similarly, when the switch was on and then we turn off the switch, the current immediately stops to zero. So this is not possible in the practical switches. So in the ideal switches, the switching losses is zero, but now switching losses, the practical switches, I think I covered this one. Switch on time delay. So we know this is the practical switching behavior of a transistor. When the switch was off and when it intends to turn on the switch, और आपने इसी मौके पे बेस पे करंट प्रोवाइड किया है, so it will not immediately turn on, but it will take slow. It will turn on slowly and gradually. So तो ये आपके पास जब स्विच ऑफ है
तो इसके क्रॉस वोल्टेज मैक्सिमम है। जब ये स्विच ऑन हुआ तो ये स्लोली एंड ग्रेजुअली इट टर्न्स ऑन, एंड जैसे जैसे वो टर्न ऑन हो रहा है उसके क्रॉस वोल्टेज कम होने शुरू हो गए। याद नहीं आ रहा कि मैंने कल कहाँ तक पढ़ा था। इफ एनीवन नो प्लीज लेट मी नो। सर ये कर लिया सर ये वाला टॉपिक कर लिया था हमने। कर लिया था, वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद फिर ये बताएं कि कहाँ तक ये कर लिया था, ये वाला सर ये कर लिया था और एग्जांपल सर भी इसका करनी थी बस। आपने मिडिल पॉइंट तक बताया था कहाँ तक बताया था? सर, वो जो मिडिल में डॉट था उसका आपने बताया था कि यहाँ पे इसका मैक्सिमम या मिनिमम जो होता है। ये अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि मैंने ये करवा दिया था। एंड यू नो अबाउट दिस वन, दिस इक्वेशन अबाउट दिस वन, द स्विचिंग लॉसेस कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस इक्वेशन। ओके, सर और ये भी मैंने न्यूमेरिकल पे थे, न्यूमेरिकल पे। ओके दैट्स गुड, थैंक यू। एग्जांपल 1.5 आई थिंक एग्जांपल ओके, मुझे याद है कि यहाँ तक मैंने करवा दिया था। तो एग्जांपल 1.5 and we calculated the switching losses was 400 watt switch on average losses, sorry, is okay. Okay, we move fast. Example 1.5, calculate average switching losses at a switching frequency of 1 kilohertz. For simplicity, ignore the conduction losses. So इसमें हमने क्या किया, conduction losses को ignore कर दिया और हमने सिर्फ और सिर्फ switching losses, conduction losses को हमने ignore किया, only switching losses हमने and in order to know the switching losses we have to use this equation 1/6 Vs Is. Vs was the maximum voltage and Is was the maximum current, and we calculate, मुझे याद आ गया मैंने यहाँ तक करवाया था। ये 1/6 Vs and Is can be calculated by the differential voltage across this resistor. The differential voltage across this resistor was Vs, and here is Ce, and divided by its own resistance. So we calculated. So switching losses on average was 400 watt. Now the energy losses was, in order to know the energy losses, just multiply with the time it exists for that loss. So the time was 1.5 microsecond. It is given in the example. And we calculated that the average power loss during switching is 1.2 watt. Okay, we did this on example 1.6 का भी मेरे ख्याल में शायद कुछ पार्ट मैंने करवा दिया था example 1.6 का, if anyone know. Okay, anyway, I have to start fast. So 1.6, a transistor switch controls 25 kilowatt load. ये जो transistor है, this one is basically the load here is 25 kilowatt load. Find conduction losses, switching losses, total losses, and total average power losses. So every kind of loss we have to find here, the conduction losses, starting from the conduction losses and the switching losses, and then we will try to calculate the average losses per cycle and average power losses. Okay, so the turn on switching time is 1.5 microsecond and turn off switching time is 3 microsecond. So what does it mean? ये switching time है, it's not the time period. The time period can be calculated by this frequency. Again, there are two different times. You must have to be distinguished. This एक time है clock की, जो pulse width modulation से जो clock आ रही है, उस clock की ये frequency है. इसका time कितना होगा? Frequency is 100 Hz. So the frequency is 100 Hz, time is equal to 10 millisecond. So इस clock की ये जो pulse width modulation technique है, इसकी जो clock है उसकी frequency 100 Hz है, उसका जो time period है total 10 millisecond है, तो on time will equals to off time. On time 5 millisecond है, off time 5 millisecond. अच्छा, ये भी मुझे याद पड़ता है, शायद मैंने करवा दिया था. ओके, एनीवे, तो मैंने रिकॉर्डिंग नहीं देखी. ओके, तो नाउ what we have to do,
आपको पता है क्या है, पूछा गया आपसे, you have to calculate all type of losses. Conduction loss, start with the conduction losses, and then we will calculate the switching losses. So first we must have to draw the waveform. This is the waveform as we have seen in the previous slides. So this is this why it is not completely down, it is a little bit lifted. Why it is a little bit lifted? क्योंकि जब स्विच ऑन होगा तो इसके जो अक्रॉस वोल्टेज जैसे डायोड है उसके अक्रॉस वोल्टेज 0.7 होते हैं. When the transistor is on, इसके अक्रॉस वोल्टेज V saturation होते हैं. Collector to emitter saturation voltage it can be 1.52 voltage. ठीक है, but it's low voltage. तो ये हमने यहाँ पर थोड़ा सा लिफ्ट किया है because we have to calculate the conduction losses as well. इसी similarly यहाँ पर current है, so the current is also lifted. It is not touching the x-axis. क्यों? कि जब स्विच ऑफ है तो इसके क्रॉस इसके थ्रू लीकेज करंट होगा. जब लीकेज करंट होगा इसका मतलब ऑफ में वोल्टेज मैक्सिमम है, ऑफ की कंडीशन में करंट लीकेज करंट है. सो वी कैन कैलकुलेट द पावर लॉसेस. पावर लॉसेस हाउ वी कैन कैलकुलेट पॉइंट टू पॉइंट. इस पॉइंट को मल्टीप्लाई करेंगे इस लीकेज करंट से, फिर यहाँ पर रिजल्टेंट ड्रॉ कर देंगे. इस पॉइंट को मल्टीप्लाई करेंगे इस पॉइंट एंड देन जो प्रोडक्ट आएगा उसको यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे. So if you take the graph paper and take some suitable example or this example 1.6, you can able to draw this one as we have explained before. So now what we have, this is the conduction losses. This period is the conduction losses, and the conduction losses can be calculated by simply multiplying the supply voltage with the leakage current. So I have shown here. अच्छा, इसके बाद this is also the conduction losses. This conduction losses because it stays on. The switch stays on. Switch कोई transition period में नहीं है. If it is not in the transition period, then it means it is stable, and this loss is conduction losses because it is conducting. Conducting means off is also conducting and on is also conducting. So यहाँ पर conduction losses again we will use the same equation. इस voltage को यहाँ पर saturation voltage, इस voltage को इस maximum current से multiply कर देंगे. We will end up with the conduction losses. Now the rest of the, so we have discussed the two losses, the conduction losses. This is the conduction losses when the switch is off, and this is the conduction losses when the switch is on. Now the rest of the this is the switching losses, and here we know we already have explained this is the center point. This is the center point, and at the center point the peak of the losses will be at the center point. So we can calculate, and equation for this one, इस लॉस को कैलकुलेट करने के लिए जो इक्वेशन हमने ड्राइव किया था वो दिस वन था. नाउ कंडक्शन लॉसेस, एक तरीका ये है कि आप कंडक्शन लॉसेस इसी इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन सेपरेट पैराग्राफ यू कैन आल्सो कैलकुलेट हियर. इसी ग्राफ को आप कंटिन्यू कर लें, डाउनवर्ड कंटिन्यू कर लें. यहाँ पे आप बीएस की वैल्यू प्लेस करें, आई लीकेज मल्टीप्लाई करें, तो यू कैन डू आल्सो द सेम. सो द फर्स्ट द कंडक्शन लॉसेस. कंडक्शन लॉसेस मींस इस लॉसेस को हम सिर्फ कैलकुलेट करेंगे. So what is the conduction loss? P loss of Vs into I leakage. Power loss during off state. जब state लिखा है ये stable state है. Power loss during off state. This is the off state. इस off state में power loss कितना है? Vs I leak. And if you place this an energy loss during off state, इसको सिर्फ हमने टाइम ऑफ से मल्टीप्लाई कर दिया है. सो वी एंड अप विद 2.5 मिली जूल्स. इसी तरह से पावर लॉस ऑन स्टेट, वेयर इज द पावर लॉस ड्यूरिंग ऑन स्टेट. ऑन स्टेट मींस दिस इज द ऑन स्टेट, और इसमें पावर लॉस ये वैल्यू है. हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू? वी सैचुरेशन मल्टीप्लाइड बाय IS, and the energy loss definitely because this is the on time, so we have to multiply it by the on time. So we got there are two conduction losses during the off state.
and during the on state. So if we add these two losses, 2.5, 3.75, so we will get 377.5 millijoules. So we calculated the conduction losses, and please remember these values. If we want to review these conduction losses, we can see this there is a significant difference between the on off period में losses कितने हैं? Only 2.5 millijoules, and on period में the losses is 375 millijoules. So it's in hundreds, and this one is just in 2.5. So of course इसका मतलब ये हुआ कि the main losses during the conduction process is basically dominant by the power loss during on state. The on state में normally power loss ज़्यादा है क्योंकि जो saturation voltage है वो it is in the 1 or 2 volt, but जो off state है इसमें why the loss is very less is comparing with this one, this loss is ignorable. We generally ignore the losses due to the leakage current. Where is the leakage? This is the leakage, and where is the leakage? Leakage is this current. So because leakage is in milliamperes only, might be it can down to microamperes. So if we take as in this example the milliampere, the leakage in the milliampere is given 1 milliampere. So that's why it is. This is the main reason that this loss is very low because of the very low leakage current, and this loss is significant because of the significant saturation voltage. Hope you understand. So the conduction losses total is 375. Now we have to okay. Now it's time to calculate the switching losses. मेरे ख्याल में यहाँ तक मैंने आप लोगों को करवाया था. Now switching losses. Where is the switching losses? This is the switching losses. सिर्फ आपको ये values मालूम करनी है, तो this is very simple and straightforward solution. Energy, अच्छा यहाँ पर हमने power loss नहीं लिखा, directly we calculated the energy loss during on switching. Must have to use the word switching. Energy loss during on transition or during on switching. 1/6 VS IS time क्या लगा देंगे? यहाँ पर चूंकि on time है, so we will use the on time. And if you calculate on time is 1.5 microseconds, 6.25 millijoules. Energy loss during off switching में if you remember, so the switching time जो आपके पास off में दिया हुआ था 3 microsecond दिया, 12.5 millijoules. So the total energy loss per cycle, ये एक साइकिल है, यहाँ से स्टार्ट किया और दिस इज वन टाइम पीरियड. इस टाइम पीरियड में टोटल एनर्जी लॉस पर साइकिल इस दो दफा है, एक ये और एक ये. सो कंडक्शन लॉसेस, सॉरी एनर्जी लॉस पर साइकिल मींस टोटल एनर्जी की बात कर रहे थे. कंडक्शन लॉसेस प्लस स्विचिंग लॉसेस, यहाँ से लेके ये एक साइकिल है, इसमें कितने लॉसेस है? कंडक्शन लॉसेस, स्विचिंग लॉसेस प्लस कंडक्शन लॉसेस प्लस स्विचिंग लॉसेस. सो ऑल वी नीड टू ऐड तो पहले हमने कंडक्शन लॉसेस कितने निकाले थे? 377.5 मिलीजूल्स, एंड इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा. अनफॉर्चुनेटली आई डिड नॉट ऐड इट सेपरेटली, बट इफ यू ऐड दिस टू वी विल गेट द स्विचिंग लॉसेस. The switching losses will be 6.25 plus 12.5, it's 18.75 millijoules. So the total loss is 396.25 millijoules. And total average power loss is 39.6 watt. जी वालेकुम सलाम जी. अरे यार वो मैंने अटेंडेंस नहीं लगाया, आज मैं लगा दूंगा यार. वो लास्ट वीक मैंने अटेंडेंस नहीं लगाया है, वो आज मैं लगा दूंगा इस वीक. हाँ अभी मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ. हाँ नहीं बोले बोले कोई मसला नहीं. नहीं 3 आवर के आप लगा दें.
पिछले वीक की ना 3, हाँ पिछले 3 दिन आगे मैं यार कल, जी जी, हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया। कोई क्लास मेरी मिस नहीं हुई है, ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच यार, थैंक यू वेरी मच। अभी मेरी ऑनलाइन क्लास हो रही है, ठीक है, अल्लाह हाफिज। हाँ हाँ हाँ, मैं बिल्कुल आज कर दूंगा, थैंक यू। Excuse me. Once again, total average power loss is 39.6 watt. So what is the commands? You must have to, देखिए ये जो है ना, what we are doing, अरे यार, what we are doing nothing. Just हम एक इलेक्ट्रिकल सर्किट लिया है और आप देखें हम यहाँ पर कुछ भी कोई खास काम नहीं करें। एक सिंपल बेसिक सर्किट लिए, सप्लाई कनेक्ट किया है, लेट्स सपोज 12 वोल्ट है या 1.5 वोल्ट, और आपने एक लोड लिया है, द लोड इज गिवन टू बी 25 किलोवाट, एंड द ट्रांजिस्टर से ओनली यूजिंग 2 कंपोनेंट्स लोड, बल्कि सिंपल एक ही कंपोनेंट्स है ट्रांजिस्टर। सो वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग वेरी स्पेशल, जस्ट वी आर डूइंग ऑन द इंट्रोडक्टरी लेवल कि हमने क्या फाइंड आउट किया है, conduction losses we found, switching losses we found, total losses we found, and we have to comments about this one कि यहाँ पर क्यों नहीं आगे जा रहा, okay, so and okay, and so we found 39%. You must have to comments about this one कि इसमें कौन से losses dominant है. As I already explained you, the losses due to the leakage current is not dominant, it can be ignored. लेकिन ये तो हो गया conduction losses. If we compare the conduction losses, then this is true. And if we compare the switching losses is significant in both the cases. ये during on switching losses, during on switching transition, this is the loss, and because ऑफ में चूंकि टाइम यहाँ पर डबल है, यहाँ पर टाइम 1.5 माइक्रोसेकंड है, यहाँ पर टाइम इन्होंने किया हुआ है 3 microseconds. Of course it has to be double, so this is significant, both the values are significant, none of the values can be ignored, and the total loss अगर आप ये देखें इसमें, इस केस में देखें, so if we compare ये जो क्या है एनर्जी लॉस पर साइकिल, यहाँ से लेके यहाँ तक एनर्जी लॉस पर साइकिल क्या है, कंडक्शन लॉसेस है एंड स्विचिंग लॉसेस है। तो कंडक्शन लॉसेस यहाँ पर कितने 377 एंड द स्विचिंग लॉसेस इज नॉट सो मच। सो व्हाट द गुड थिंग इज कि इस एग्जांपल में स्विचिंग लॉसेस इज ओनली 18.75 and mainly the dominant part of the losses is the conduction losses. ठीक है, we have to pass comments on state conduction losses और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सारी चीज पढ़ाई है आप लोग को। On state conduction losses are this, off state conduction losses are this, on transition switching losses. So compared to the total loss of 396.25 millijoules, the dominated part of the losses is the on-state conduction loss, that is 375 millijoules. तो मेन जो है वो on-state conduction losses है, and the switching losses is not so high here. Now, the question, the example of 1.6 has 2 parts. So the first part where it was given कि जो frequency है वो 100 hertz है, and in the second part the frequency is try to increase from 100 hertz to 100 kilohertz, so 1000 times of the frequency is increased. So we calculated in part A all the losses when the frequency was 100 hertz. So same thing we have to repeat in part B. We have to calculate all the losses as what we did for the section part A, but just change the frequency from 100 hertz to 100 kilohertz. Now it's the time start. आप लोग लगता सो रहे हैं, so the time starts to ask some questions. ये बताएं कि why they want to increase the frequency from 100 hertz to 100 kilohertz, and who is
ताकि लॉसेस कम हो जाए। ये सेम क्वेश्चन मैंने कल पूछा था आप लोगों से। नो सर। नो अच्छा सर, नो सर। अच्छा, फिर वो सेक्शन बी वाले थे। सेक्शन बी आर गोइंग गोइंग अहेड ऑफ यू। ओके, दैट्स गुड। ओके, द सिंपल आंसर यू गिवन मी कि हम यहाँ पे कोई भी जो डीसी डीसी कन्वर्टर, बेसिकली वी इट्स अ पार्ट ऑफ द डीसी डीसी कन्वर्टर। We are not learning anything about the linear power electrons. We are learning the high speed switch mode power supplies. We are learning DC DC converter. We are learning high, I mean, is the chopper converters. So हम यहाँ पर इस कोर्स में हमने मेनली फोकस किया है डीसी डीसी कन्वर्टर, एंड वी यू नो द डीसी डीसी कन्वर्टर is operating at a very high frequency. But the question is just, it's a review question, why we in this part, or anyone, any electrical engineer, when they design the DC DC converter, it is their primary objective to increase the frequency. And this example shows the same 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 tendency कि हम इस एग्जाम्पल में 100 हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाह रहे हैं 100 किलो हर्ट्ज। नाउ वी शुड नो द रीजन। इट्स नॉट कि आप सिर्फ सॉल्व करें एग्जाम्पल और आपने जो क्वेश्चन दिया हुआ न्यूमेरिकल वैल्यू फिट किया, आपने आंसर निकाला और लेट्स you got 10 of 10 marks. No, it is not. It is not the desire. Desire ये है कि आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए। तो आपने किसी ने ये बताया कि हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इसलिए इंक्रीज करना चाह रहे हैं ताकि लॉसेस कम हो जाए। ओके ओके ओके, कोई और बताए किस तरह लॉसेस कम होंगे यहाँ पर? अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करूंगा ऑफ कोर्स लॉसेस कम होंगे, लेकिन कैसे लॉसेस कम हो जाएंगे? कोई और बताएगा? सर मैं भी बता दूं। हाँ बताइए। सर जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी ना तो स्विच का जो स्विचिंग टाइम होगा ना वो भी कम हो जाएगा। मतलब वो उसका ट्रांजिशन टाइम कम हो जाएगा ऑन होने से ऑफ होने के दरमियान। मतलब वो बहुत जल्दी ऑन ऑफ होगा तो उससे लॉसेस और कम हो जाएंगे सर। अच्छा ओके, वी विल सी। आपने जो आंसर दिया ना इसको थोड़ा सा नोट रखना, एंड वी विल सी इन एटलीस्ट इन टुडेज क्लास कि व्हाट इज द एक्चुअल फैक्ट, क्या होगा। अच्छा, अब कोई अगर बताना नहीं चाह रहा तो मैं आपको ये बता दूं कि देखें जो भी डीसी डीसी कन्वर्टर है एंड व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार, उसमें हमने मेनली स्टोरिंग एलिमेंट हमने कौन कौन से इस्तेमाल किए? इंडक्टर्स इस्तेमाल किए। स्टोरिंग एलिमेंट हमने कैपेसिटर इस्तेमाल किया। मेनली जो स्टोरिंग एलिमेंट है वो इंडक्टर है। इन ऑर्डर टू मेक द कन्वर्टर इन द सीसी मोड ऑफ ऑपरेशन हम इंडक्टर की वैल्यू ज्यादा लेते हैं। इट्स एंड if you compare in the DC DC circuit, so there you can find the transistor, you can find the resistor, you can find the supply, you can find also the inductor, you can find also the capacitor. But uh, among all these elements, the inductor is a bulky, is a very big size, is of very big size, and it's because इसके अंदर कॉइल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, आई मीन वाइंडिंग्स इस्तेमाल हो रही है, तो देयर इज लॉसेस। तो इसमें लॉसेस के साथ साथ इसके अंदर चूंकि इंडक्टर इज इंडक्टिव लोड। इंडक्टर में क्या होता है कि आप इसमें हार्मोनिक्स भी जनरेट होते हैं। ओके, वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट द हार्मोनिक्स, लेकिन यू शुड नो कि इसमें हार्मोनिक्स भी जनरेट होते हैं जिसकी वजह से इसके लॉसेस बढ़ जाते हैं। एंड इट्स अ बिगर इन साइज, इट्स अ बल्क इन साइज, तो इसमें कॉपर ज्यादा इस्तेमाल होता है और जिसकी वजह से इसके अंदर लॉसेस ज्यादा होते हैं। अगर मैं यही इंडक्टर छोटे साइज का इस्तेमाल करूंगा, तो इसमें लॉसेस कम होंगे, हमिंग कम होंगे, इसमें हार्मोनिक्स कम क्रिएट होंगे। तो इट इज ऑलवेज द डिजायर of an electrical engineer or electronics engineer, if they are going to design the DC-DC converter, it is their objective to raise the frequency from low value to high value, and this is still in the research phase. Everyone internationally हर यूनिवर्सिटीज के अंदर जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सेक्शंस हैं, इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही हो रहा है। अगर आप रिसर्च पेपर देखेंगे तो you will always find that they want to increase the frequency. So
this was 100 hertz is a very low frequency. Nowadays, if I remember correctly, कि आज से 7-8 साल पहले तक जो रिसर्च था, जो मैं फेस कर रहा था, उसमें frequency was reached up to 2 or 3 megahertz, 2 or 3 megahertz, and no one did design beyond this megahertz frequency. So इसका मतलब ये है कि still everyone is trying to increase the frequency. So you know why, what is the importance of the frequency. The bottom line is we can conclude that it's always desired to increase the frequency, because the higher the frequency, the inductor size will be lower. And why it is? Okay, I have one information about this one. लेकिन मैं इसको ना थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ, आपको बताता हूँ इसमें क्यों. yes क्यों, मतलब साइज क्यों कम होगा. Okay, let's see. You know, this is the popular equation for the capacitor. Capacitance can be calculated by 1/2 pi fxc. ठीक है, where इसी तरह से इंडक्टर की वैल्यू किस तरह निकालते हैं. इंडक्टर के लिए इक्वेशन कौन सा है, xl/2 pi f. ठीक है, तो इंडक्टर मींस this is inductor, this is L, this is the value of the Henry, millihenry. More the millihenry, more the size of the inductor. ठीक है, and more the losses. That's correct. So अब आप ये देखें, इस हेनरी, इस इंडक्टेंस की जो साइज है वो कैसे कम हो गई. This is constant, 2 is constant, pi is constant. So the only left component is the frequency. अगर मैं frequency बढ़ाऊंगा, for example 100 हर्ट्ज से 100 किलो हर्ट्ज करूंगा, आप लोगों में से कोई ये बताए कि इंडक्टेंस की वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी. Let's me ask. जहांजेब आप यस बताएं. सर. ये सर बताएं फ्रीक्वेंसी कि की वैल्यू ये जो मैंने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ाएंगे तो सर इंडक्टर की वैल्यू कम होगी. जाहिर सी बात है. अगर आपने फ्रीक्वेंसी 10 रखा है तो कुछ इंडक्टेंस की वैल्यू निकलेगी. अगर आपने फ्रीक्वेंसी 10 से 100 कर दिया है तो ये वैल्यू और रिड्यूस हो जाएगी. 100 से डिवाइड हो गए तो इंडक्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी. दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. तो इट मींस के if the frequency is increased, if we want to keep this inductance low, तो आपको फ्रीक्वेंसी कितनी रखनी पड़ेगी, हायर, as high as possible. तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमने, अगर हम यहाँ पे इंक्रीज करते हैं तो इंडक्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होगी. दिस इज द main fundamental concept. Based on this concept, we always try to increase the frequency. if frequency increase करेंगे, इंडक्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी और आपका जो कन्वर्टर है, that will be compact, that will be very efficient, and that will have of course low losses और हार्मोनिक्स भी कम होंगे. बहुत सारे जो इंडक्टेंस की वजह से जो प्रॉब्लम्स आते हैं ना, स्टार्टिंग जो पॉइंट्स हैं वो भी आपके काफी स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे. So there are many reasons, but you have to only explain. आप सिर्फ 1 या 2 रीजन बताएंगे एग्जाम में, आपको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है. ओके, सो नाउ वी कम टू द ओरिजिनल. तो यहाँ पे ये क्या करना चाह रहे हैं कि रिपीट पार्ट ए, इफ द स्विचिंग फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज फ्रॉम 100 to 200 किलोहर्ट्ज. ओके, वी विल सी हाउ कैन डू इट. So this example 1.6, the same example, but this time the frequency is not 100 hertz. यहाँ पर this is the solution for part B है. Frequency is 100 kilohertz. So 100 kilohertz में time period कितना हो जाएगा, 10 microsecond. So what is this? This is the time period of the pulse width modulation technique. Pulse width modulation output waveform. On time and off time. ये वो है, ये स्विचिंग टाइम नहीं है. स्विचिंग टाइम कौन सा है, ट्रांजिस्टर की जो स्विचिंग टाइम है स्टिल इज द सेम, क्योंकि ट्रांजिस्टर हम सेम इस्तेमाल कर रहे हैं, सेम ट्रांजिस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं और सेम हमने लोड इस्तेमाल किया है. ओनली हम सॉफ्टवेयर में, माइक्रो कंट्रोलर में जा करके हम सिर्फ जो है ना फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं. सो द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम. सो इट मींस के if frequency okay, so the
10 microsecond. Recall in the first part, the time was 10 millisecond, means t on t off 5 मिलीसेकंड था. इस केस में क्या 5 मिलीसेकंड है? नहीं है. इस केस में टाइम पीरियड, टोटल टाइम पीरियड कितना है? 10 माइक्रोसेकंड है. तो ऑन टाइम कितना हो जाएगा? 5. ये गलत दिखा हुआ है. आई थिंक दिस इज ओके. ओके. सो वी नो कि जो टाइम पीरियड है ऑन टाइम यहाँ पर 5 माइक्रोसेकंड हो जाएंगे और ऑफ टाइम भी 5 माइक्रोसेकंड हो जाएंगे. ओके, बेसिकली मैंने यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर नहीं किया है, बट आई एम वर्बली आई वांट टू एक्सप्लेन यू. ये मैंने बेसिकली वेव फॉर्म ड्रॉ किया है फॉर पार्ट 1, पार्ट ए के लिए. पार्ट ए में ऑफ टाइम कितना था? 5 मिलीसेकंड. पार्ट ए में कितना था टाइम? टोटल टाइम 10 मिलीसेकंड था. तो हाफ टाइम कितना हो गया? 5 मिलीसेकंड. And then the rest of the half time is also 5 millisecond. So we wrote here t off is equal to 5 millisecond, t on is equal to 5 millisecond while solving the part A. क्यों हमने पार्ट ए में क्यों हमने डायरेक्टली 5 मिलीसेकंड ले लिया था? इसलिए लिया था, अगर आप इस फिगर में देखें, although this is not a scale figure, but it is exaggerated in order to show this small amount of time. T switch on कितना था यहाँ पर? 1.5 माइक्रोसेकंड था. और T switch off कितना था? T switch off was 3 माइक्रोसेकंड. और आपके पास टाइम, ये दिस इज रिलेटेड विद द पार्ट ए. टाइम आपके पास 10 मिलीसेकंड था. ऑन टाइम आपने 5 मिलीसेकंड डायरेक्ट ले लिया है, बल्कि ऐसा तो नहीं है. 5 मिलीसेकंड हमने डायरेक्ट इसलिए लिया है. इन एक्चुअल दिस इज नॉट 5 मिलीसेकंड. आपको क्या करना पड़ेगा? ये 5 मिलीसेकंड से ये टाइम माइनस करेंगे आप, तो भी यू विल एंड अप विद द करेक्ट ऑफ टाइम. क्योंकि जो 5 मिलीसेकंड है इसमें ऑन टाइम भी शामिल है और ये जो ट्रांजिशन टाइम है ये भी इंक्लूडेड है. बट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी वी यूज्ड इन पार्ट ए डायरेक्टली 5 मिलीसेकंड. क्यों? इसलिए कि अगर आप इसको कंपेयर करें 5 मिलीसेकंड और ये 1.5 माइक्रोसेकंड है, तो कैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे? दिस वन इज वेरी स्मॉल, सो ऑफ कोर्स यू हैव टू इग्नोर. और इफ यू वांट टू कंपेयर ये 1.5 माइक्रोसेकंड है, इसको भी आप माइक्रोसेकंड में कन्वर्ट कर दें, तो दिस विल बिकम 5000 माइक्रोसेकंड. सो कंपेयरिंग 5000 माइक्रोसेकंड विद 1.5 माइक्रोसेकंड, 5000 माइक्रोसेकंड को आप 1.5 माइक्रोसेकंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 4998.5. that is equals to 5 millisecond. So मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था. तो पार्ट ए में हमने इस वाले टाइम को इग्नोर किया है, राइट? हमने डायरेक्ट ये टोटल टाइम 5 मिलीसेकंड ले लिया है. क्यों इग्नोर किया? नाउ यू अंडरस्टैंड करेक्टली, क्लियरली यू अंडरस्टैंड. इसी तरह से ऑफ टाइम यहाँ पर 3 माइक्रोसेकंड था, तो कंपेयरिंग 5000 माइक्रोसेकंड विद 3 माइक्रोसेकंड, दिस इज just ignorable. So for the sake of simplicity, in the part A we took the on time and off time equals to 5 millisecond and just we ignore this time. Okay, but in this case, where is in the case of part B, where the time period is 10 microsecond or शायद मैंने, but for part B where the time period is 10 microsecond, switching time cannot be ignored. Part B में हम इस switching time को ignore नहीं कर सकते हैं. So I have redrawn the graph for the part B. So this is the graph of the part B. Part B में total time period कितना है? How much? This is from starting to end. So the total time, because the frequency is increased, so 10 microsecond and half of this cycle will be, half of the cycle कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेके इस यहाँ तक है. कितना हो जाएगा? 5 microsecond and the rest half will also equals to 5 microsecond. Hopefully you are understanding. अब इसमें हम we cannot write off time equal to 5 microsecond क्योंकि this is also in microsecond and this is also in microsecond, both are significant.
So we cannot ignore either of the values. ठीक है, तो हम यहाँ पर जो ऑफ टाइम है वो कैसे निकालेंगे? टोटल 5 माइक्रोसेकंड टाइम में से ये वाला टाइम आप माइनस कर देंगे, बिकॉज वी नो अबाउट दिस टाइम. सो वी विल एंड अब स्विच ऑफ टाइम यहाँ पर 3.5 माइक्रोसेकंड है. रिमेंबर इन पार्ट ए the switch off time was 5 millisecond, but in this case switch off time direct 5 microsecond नहीं होगा, बल्कि इसे भी हम माइनस करेंगे. Hopefully you understand. And similarly the things are for the next half cycle. 2 microsecond है, ये दिया हुआ है T on, और जो ट्रांजिशन टाइम कितना दिया, नहीं सॉरी ये नहीं गिवन है, ये गिवन है कि ऑन टाइम 1.5 माइक्रोसेकंड था और स्विचिंग ऑफ टाइम 3 माइक्रोसेकंड था. तो अब ये टोटल 5 माइक्रोसेकंड है, इसमें 3 माइक्रोसेकंड है, तो अब ये वैल्यू कितनी बच जाएगी? 2 माइक्रोसेकंड. एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस वन? I think I explained many times repetitively, so there will be no question. Okay, so in part B, where the time period is 10 microsecond, the switch time cannot be ignored. यहाँ पर हम इसको ignore नहीं कर सकते. From figure, it is clear that T of time is इसे इन्हीं चीजों को मैंने यहाँ पर दोबारा लिखा है. Now it's time to calculate the conduction losses, the switching losses, and the total losses. So now it's time for the conduction losses. Conduction losses किस तरह निकालेंगे? Okay, I have explained again. I don't know why I want to explain many times. So this is the conduction loss. अच्छा, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वैल्यू नहीं करी. Oh my God. So energy loss of state ऑफ, ये कंडक्शन लॉस निकाल रहे हैं ना, इस लॉस को निकालेंगे और ऑफ को और ऑन को निकालेंगे. तो एनर्जी लॉस ऑफ स्टेट में कितना है? BS लीकेज टाइम ऑफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो वी एंड अप विद 1.75 माइक्रो जूल्स. ये एनर्जी लॉस आ गया. टाइम, इस पूरे टाइम के लिए जो एनर्जी लॉस हुआ है वो 1.75 माइक्रो जूल्स है. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द, as I leak is very less than IS. IS कितना दिया हुआ था? I think it was given IS की वैल्यू 50, I think 50 amperes था, and I leakage is 1 milliampere. So as I leakage is very less than IS, so the losses in the off state are ignored. The losses in the off state, it's very little loss, it can be ignored. And it is, why it is little? Because of the I leakage current. Energy loss during on state 2 microsecond इस्तेमाल करेंगे, is only valid for the 2 microsecond. So 150 microjoules. If you compare this one with this one, so this is significant, and of course this is ignorable. Total conduction loss कितना हो जाएंगे? इस लॉस को इस लॉस से ऐड कर दिया. So 151.75. Yes. Now time to calculate the, this is not. Now it's time to calculate the switching losses. So energy loss during on switching ये वाला है. It's simple. You have to use this equation. It's direct, and we end up with 6.25 millijoules. Oh my God. याद रहे कि जो स्विच कंडक्शन लॉसेस अभी जो हमने कैलकुलेट किए वो क्या थे? माइक्रो जूल्स में थे. अब एनर्जी लॉस ड्यूरिंग ऑन ट्रांजिशन इज 6.25 मिली जूल्स. एनर्जी लॉस ड्यूरिंग ऑफ ट्रांजिशन क्या है? ये ऑफ ट्रांजिशन, इस ऑफ ट्रांजिशन है 1.6 VS IS T switch off. T switch off is 3 microsecond. Of course this is double than this one. डबल है तो ये 12.5 मिली जूल्स. तो total switching losses during transitions, this loss plus this loss 18.75. अब टाइम है कि दोनों लॉसेस को, कंडक्शन और स्विचिंग लॉसेस को ऐड कर दें. टोटल एनर्जी लॉस पर साइकिल, कंडक्शन लॉसेस प्लस स्विचिंग लॉसेस. कंडक्शन लॉसेस हमने लास्ट टाइम रिमेंबर क्या कितना निकाला था हमने?
151 microjoules, and switching losses was 19 millijoules. So 18.9 millijoules. It should be noted that switching losses is very high than the conduction losses. टोटल एनर्जी लॉस आपका निकल गया 18.95 मिलीजूल, पर आप यहाँ पर देखें कि जो कंडक्शन लॉसेस है इज जस्ट इन माइक्रो जूल्स एंड द स्विचिंग लॉसेस इज वेरी हाई मिलीजूल. इट मीन सिंपली हम कह सकते हैं स्विचिंग लॉसेस इज 1000 टाइम्स ग्रेटर हायर देन द कंडक्शन लॉसेस. So this is the important result here कि यहाँ पर स्विचिंग लॉसेस बहुत ज्यादा है. ठीक है. टोटल एवरेज पावर लॉस कैसे निकलेगा? ये तो हमने टोटल पावर लॉस निकाला ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का. अब आपको टाइम से, अगर आप टाइम पीरियड 10 माइक्रोसेकंड से डिवाइड कर देंगे तो द टोटल एवरेज पावर लॉस विल बी 1900 watt approximately. In exact it is 1890 watt approximately. In the book the value is this described. So approximately हम कह सकते हैं कि टोटल पावर लॉस यहाँ पर कितना है 1900 watt, and that's really very big. And why it happens? पहले कितना वाट निकला था कंडक्शन लॉस? उसमें मेरे ख्याल में 39.6 वाट लॉस टोटल लॉस निकले थे. 39.6 conduction losses plus switching losses in part A. But in part B, the conduction losses plus switching losses is 1900 watt. That is really very high value. Now we have to review why this is the case. What happens? The only thing what we did, हमने ट्रांजिस्टर वही रहने दिया, हमने सारी चीजें हमने वही रहने दी, हमने सिर्फ ये क्या है फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया है. एंड द रिजल्ट वी आर गेटिंग इज अ वेरी हॉट ट्रांजिस्टर. ट्रांजिस्टर इतने में इतने वाट पे अगर आपको ट्रांजिस्टर इतने लॉस पे अगर आप ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करेंगे तो इट विल स्टार्ट टू बर्न. ये जो है ना ग्लो हो जाएगा, जल जाएगा immediately because this is too much value, right? So now comments. At 100 hertz average power loss was 39.6 watt in part A, whereas after increasing the frequency to 100 kilohertz the power loss becomes 1900 watt, which is quite high. Thus, it can be stated that at higher frequency, losses starts to increase, or at higher frequency, losses are very high. This is the conclusion. अब क्या प्रॉब्लम आ गई? आप क्या चाह रहे हैं? कन्वर्टर को at high frequency पे ऑपरेट करना चाह रहे हैं. Everyone tries to operate their DC-DC converter at a very high frequency. लेकिन what we have seen here practically, कि अगर आप कन्वर्टर की फ्रीक्वेंसी को 100 हर्ट्ज से 100 किलो हर्ट्ज लेके जाते हैं तो लॉसेस आर वेरी हाई, is dangerously high, and it cannot be operated. क्या आप इतने लॉस में ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करें? आप कर ही नहीं पाएंगे. जैसे आपने DC-DC कन्वर्टर डिजाइन किया, आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, फौरन ही थोड़ी देर में वो ग्लो होगा और it will burn out after getting red flame बन जाएगा. So you cannot work. If we look in depth, we find that compared to the conduction losses, the switching losses are very high at higher frequency. हमने ये देखा यहाँ पर switching losses कितने थे? मिली जूल्स में थे. यहाँ पर हमने क्या देखा? Conduction losses कितने थे? माइक्रो जूल्स में थे. And switching losses was very high. If the frequency is further increased, अगर फ्रीक्वेंसी को अगर आप सोचें कि आप एक डिजाइनर हैं और आप फ्रीक्वेंसी को 100 किलो हर्ट्ज से
मजीद इंक्रीज करना चाह रहे हैं, if the frequency is further increased beyond 100 kilohertz, then the switching losses will become more dominant, resulting in no use or the destruction of the, I'm sure it will result in the destruction of the converter, immediate destruction. So what is the point? Yes, I ask. सोते हुए कुछ जगाऊं? 020, who is 020? Abdul Hassan? नहीं है. 009, साद खान. uh, 001, मुजीबुर रहमान. कितने लोग पहुंचे? 26 है. अच्छा, 029. सारी रिकॉर्ड हो रही है, याद रखें. आप लोग जवाब नहीं दे रहे. अगर कोई खुदा न खास्ता ऑडिट होता है तो पता चलेगा कि आप लोगों को एब्सेंट ट्रीट किया जाएगा. 035. फहद मुख्तार. 041. जी अस्सलाम सर. 041 बात कर रहे हैं. अदनान खालिद. जी सर. अच्छा, वो आप ठीक है. अच्छा, तो अदनान खालिद साहब, हाँ, तो बताइए कि क्या हमने एट द एंड ऑफ क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं यहाँ पर, क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब हमने फ्रीक्वेंसी को 100 से बढ़ा दिया है तो सर उसमें हमारे पास जो स्विचिंग लॉसेस है सर वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट हो गए हैं. तो सर तो फिर इसका ये होगा. जी सर. हाँ, नहीं बोले कंटिन्यू करो. सर फिर इससे ये होगा कि हमारा जो डीसी कन्वर्टर होगा सर फिर इसका कोई यूज़ नहीं होगा क्योंकि सर उसमें स्विचिंग अगर बढ़ जाएंगे तो सर हमारे वो किसी काम का नहीं रहेगा. यहाँ पे सर ये हमारी प्रॉब्लम आ रही है. ये प्रॉब्लम आ रही है. दैट्स गुड. अच्छा, सेम क्वेश्चंस मैं किसी और से पूछना चाह रहा हूँ. थैंक यू वेरी मच अदनान वलीद खान. अच्छा, अब दूसरे कौन है यहाँ पर? 041, 042 कौन है? 042 हिमायू अरशद. आपको मेरी आवाज आ रही है? 042. 059 पे कौन है? फजील राजा, तुम तो ऑनलाइन आ जाओ. यस सर, मैं तो ऑनलाइन. ओके, थैंक यू. जी जवाब दें, क्या प्रॉब्लम आई है? सर वही मसला कि अगर हम लोग 100 के से ज़्यादा भी क्या नाम है फ्रीक्वेंसी को लेके जाएंगे ना तो हमारे स्विचिंग लॉसेस वो डोमिनेट करने लगे. और जो अच्छा, हमारा बिल्कुल कन्वर्टर होगा उसका कोई यूज़ नहीं है. बिल्कुल सही फजील, बहुत शुक्रिया आपका. अच्छा, 059 के बाद 06 यहाँ पर मेरे पास 064 है. हु इज 064? 064 है शहजाद अहमद खान. यस सर. जी, ये बताएं कि पहले आपसे थोड़ा सा मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ. पहले ये बताइएगा, अच्छा खासा सिस्टम चल रहा था 100 हर्ट्ज